हम आप लोगों को आज डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स बताने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में पूछता ही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसमें से एक तो क्वेश्चन है, अपर लिमिट पाई बाय 2 है, लोअर लिमिट 0 है, साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बटे 4। आपको रिजल्ट लाना है, प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे? तो आप देखेंगे यहाँ कि इसको आप आई लेट करें, लेट आई पाई बाय 2 0 साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसको आप नंबर 1 लें। आप इसको सपोज करें इंटीग्रेशन इक्वल टू ये है, आप इसको नंबर 1 दें। अब हमारा आगे जो होगा वो इसका नियम है कि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ दें। दोनों को जोड़ने के बाद पाई बटे 2 होता है। आप उसमें से हर एक के एंगल को आप माइनस कर दें, अर्थात ये पाई बाय 2 प्लस 0 हो गया पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 में आप यहां माइनस कर दें एक्स को, इस तरह से करें। होल डिवाइडेड बाय, इसमें भी साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। आप क्या करें, फर्स्ट स्टेज में आप सपोज करें इसको इंटीग्रेशन इक्वल टू दिस मच, और फिर सेकेंड स्टेप में अपर लिमिट और लोअर लिमिट जोड़ दें। जोड़ने के बाद जो होता है उसमें से आप इस एक्स को माइनस करें, इस एक्स को माइनस करें, इस एक्स को माइनस करें, अर्थात साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये लिखें आप। फिर आगे होगा, आप जानते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा is equal to cos theta, means cos x, and sin 90 minus x. With the help of the formula of trigonometry, we write down here cos x plus cos 90 minus x is equal to sin x. From the formula of trigonometry, we write down this. Number 2, we suppose it. Now, adding 1 and 2. Adding 1 and 2, we write down here, adding 1 and 2, we get I and I, it becomes 2I. And now, a sin x dx divided by sin x plus cos x divided by cos x plus sin x, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अपर लिमिट वी राइट डाउन हियर पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0। नाउ दिस न्यूमरेटर इज साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर इज also sin x plus cos x. Therefore, both we cancelled. Now, finally we get here 2I equal to upper limit pi by 2, lower limit 0 and dx. Now, 2I equal to upper limit pi by 2, lower limit 0 and dx. Now we integrate here dx. We know that from the formula of integration, integration of dx becomes x. We write down big brackets. Upper limit is written down here and lower limit is written down here. Now we put here for x upper limit pi by 2 minus for x we write down lower limit 0. And finally we get here pi by 2. Therefore 2I is equal to pi by 2 and I is equal to pi by 4. ये प्रूव हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया।
इंटीग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। जो आपका गिवन है एक्सप्रेशन, वी सपोज आई इज इक्वल टू दिस मच, वी नोट इट बाय 1 and upper limit and lower limit both are added. In the addition of the upper limit and lower limit, we subtract this x, also this x and this x. Angular are subtracted. Therefore, we write down sin pi by 2 minus x whole divided by sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x into dx. From the formula, we know that sin 90 minus theta is equal to cos theta, sin 90 minus theta cos theta, cos 90 minus theta sin x. Equation now, we note it by 2. Adding 1 and 2, we get 2i and a sin x plus cos x becomes sin x by cos x. नीचे denominator में sin x plus cos x both are cancelled. We find here 2i is equal to upper limit pi by 2, lower limit 0 dx. Integration of dx becomes x. We write down b bracket and upper limit is written down here, lower limit is written down here. For x we write down pi by 2 minus for x we write down lower limit 0. Finally we get pi by 2. 2i is equal to pi by 2, therefore I is equal to pi by 4. We get the result. We have to prove that the integration is equal to pi by 4. दूसरा क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, अंडर रूट कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4. वी हैव टू प्रूव दैट. फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी सपोज दिस इंटीग्रेशन is equal to I. Let I is equal to this integration. Number 1 by 1 it is denoted. Now we first of all upper limit and lower limit both are added. After adding we get here pi by 2. We write down here cos under root cos. From the addition of upper limit and lower limit we subtract x. It becomes pi by 2 minus x whole divided by sin pi by 2 minus x plus cos pi by 2 minus x and dx. हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को ऐड कर देते हैं. ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय 2 में इस x को माइनस करते हैं, इस x को माइनस करते हैं, इस x को माइनस करते हैं. तो हम लोग क्या पाते हैं, ये अपर लिमिट पाई बाय 2, लोअर लिमिट 0, अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स dx. Now we get here pi by 2 0. From the formula of trigonometry we know that cos 90 minus theta becomes sin theta and sin 90 minus theta becomes cos theta. We write down here under root cos x plus cos 90 minus theta becomes sin theta. We write down here under root sin x and dx. This will be number 2. Now adding 1 and 2. Now adding 1 and 2. Now adding 1 and 2. Adding 1 and 2 we get 2i is equal to, we get here 2i is equal to pi by 2 0 ये sin x under root plus under root cos x whole divided by sin x under root plus cos x under root and dx. Now upper numerator and denominator both are the same,
Therefore, both will be cancelled. Now we get here 2I is equal to pi by 2, lower limit 0, upper limit pi by 2, and dx. Integration of dx becomes x. Now we write down here big bracket, and upper limit is written down here, lower limit is written down here. Now, from upper limit is written down here for x, we get here pi by 2 minus lower limit is written down here for x, we get finally pi by 2. Therefore, I is equal to ये pi by 2 and this 2 is divided here, that becomes pi by 4 proved. In this way, this problem is done. Now we will discuss some important problems on definite integration in another classes. Now today I want to stop here.